मैं अब इनवाइट करता हूं पायल रोहतगी जी. Payal ji is a social activist by choice and supports various topics of national interest. She is the director of Sangram Singh Charitable Foundation. She is the biggest asset to explore, initiate and execute with come what may attitude. आप गुजरात बोर्ड टॉपर हैं and surprisingly you are a computer engineer and fancy towards cinema and television. Your notable assignments are 36 Chinatown, Dhol, Dil Kabaddi, Rakt, Plan, to name a few, and fictions and non-fiction shows like Big Boss Season 2, reality show Survivor India Season 1, Nach Baliye Season 7. She's done TV commercials for Nescafe, Jaguar, Dabur Amla and Amul Milk. She is also a trained Kathak dancer and a long list of awards. 2012 Best Reality Television Personality, 2019 Most Influential and Politically Active Celebrity on Social Media, Face of Resurgent India 2019, Tigress of Indian OTT 2022, and so many other reputed awards she has been conferred with. मैं रिक्वेस्ट करता हूं पायल रोहतगी जी से आज के इस टॉपिक पर हम सबको गाइड करें. नमस्ते, ओम शांति. थैंक यू. आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्टैंड ऑन दिस स्टेज. ये बहुत बड़ा सरप्राइज था टू शेयर द स्टेज विद सच एस्टीम्ड पीपल. आई एम हम्बली ग्रेटफुल टू बी एबल टू शेयर दिस डायस विद ऑल ऑफ यू. प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बलनेस हियर. Before I start, okay, I'm glad I've got the opportunity to speak today because बहुत लोग कहते हैं कि पायल बहुत बोलती है and पायल की निंदा यही है कि पायल की आवाज़ कान में चुभती है. तो आज 7 मिनट के लिए आपको मेरी आवाज़ सुननी पड़ेगी and मैं कोशिश करूँगी कि मेरी आवाज़ आपके कान में नहीं चुभे. So before I start, it is very important that we speak because we are in a democratic country, and to speak we need to, when we speak we express our thoughts. बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम बातचीत करें, बातचीत करके हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, मगर हम कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं वो टोन हमें गौर करना चाहिए बिकॉज दैट इज़ वेयर वी गो रॉन्ग. आई हैड ऑल्सो गॉन रॉन्ग इन माई लाइफ, इन माई जर्नी टिल नाउ. माई टोनैलिटी वॉज नॉट वेरी करेक्ट एंड दैट आई हैव रियलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हाउ टू वर्क ऑन. तो आज इस मंच पर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मीडिया, एथिकल इश्यूज एंड सोल्यूशन, आई वुड लाइक टू टेल you something about my life and कैसे मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से ये टॉपिक के ऊपर अपनी ओपिनियन शेयर करना चाहती हूँ. My grandfather, दादाजी, late Shri Krishna Rohatgi ji was the editor of Times of India. And he was the editor of Times of India when Srimati Indira Gandhi ji was the Prime Minister of India. So he was a very, very ethical man. अब ethics की बात आती है, वो ethics जो आजकल as per a general notion हम नहीं देखते मीडिया में या journalism में. That is the thought process. Journalism is a very, very important part in democracy and that is why we need to really address this issue because ethics नहीं होंगे तो ये जो इतना important pillar है हमारी democracy का वो कहीं ना कहीं हमारे future को डगमगा देगा. So why do we need to address this? Because आजकल media में there are two things that are happening. One is fake news. Fake news में there is MediaNet, paid news, or there is concocted news which is agenda-driven news, agenda-driven narrative. ये दोनों चीज़ें बहुत हानिकारक हैं and both these things are contributing towards spoiling the name of media. So what do? I again share my example. I myself was a victim of fake news. I think 1-2 years back. उसकी वजह से एक FIR हो गया. Now the FIR is obviously being dealt with in the courts of our country, but I realized that how I should be away from fake news because I am an educated girl और मैं भी एक WhatsApp forward से became a victim of fake news. So this was my learning, my growing up.
मेरे ऊपर एक और केस था, सो आई हैड टू गो टू गुजरात हाई कोर्ट टू सॉर्ट दैट आउट. एंड व्हेन आई वेंट टू गुजरात हाई कोर्ट, आई एम जस्ट शेयरिंग इट बिकॉज दिस स्पीच इज़ नॉट प्रिपेयर्ड, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस. व्हेन आई वेंट टू गुजरात हाई कोर्ट, मैंने बहुत सारे लॉयर्स के साथ इंटरैक्ट किया, बहुत सारे लोगों के साथ इंटरैक्ट किया, एंड दे ऑल वर टेलिंग मी अबाउट द माइंड सेट ऑफ द जज. दे वर ऑल टेलिंग मी नॉट टू परस्यू द मैटर. डेट पे डेट ले लो पायल, ये मैटर को आप परस्यू क्यों कर रहे हो, इट इज़ नॉट गुड, इफ़ यू गेट अ बैड जजमेंट आपका पूरा खराब हो जाएगा केस एंड एवरीथिंग. सो एवरीबडी टोल्ड मी दैट. Why did I go again and again to Gujarat High Court? You know why? Because जब मैं गुजरात हाई कोर्ट के कोर्ट में गई तब मैंने देखा कि जज के चेयर के सामने there was recording happening. There was a YouTube telecast of live streaming of the recording that was happening in the courtroom of Gujarat High Court. उससे मुझे क्या हुआ? मुझे एक तरीके से assurance मिला कि there is going to be transparency in whatever I talk in front of the chair of the judge. एंड मैं बार बार गई, मैं 1 महीने तक लगातार हर रोज वो कोर्ट में गई. एंड आई ट्राइड टू फिगर आउट माई केस, आई ट्राइड टू फिगर एवरीथिंग आउट इन एन एरिया जो मुझे नहीं पता थी. क्यों? क्योंकि मुझे अश्योरेंस थी कि वो कोर्ट के अंदर ट्रांसपेरेंसी है. वही अश्योरेंस मीडिया को देनी है सभी लोगों को. एंड वो ट्रांसपेरेंसी हमको कैसे मिलेगी? आई थिंक मे बी बाई रिकॉर्डिंग एवरीथिंग. बिकॉज वो जो रिकॉर्डिंग हुई उससे आई वॉज थैंकफुली एबल टू गेट माई केस क्वॉश्ड एज पार्टी इन पर्सन. मैंने अपने सारे फैक्ट्स जज साहब की चेयर के सामने रखे एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई कुड गेट द केस क्वॉश्ड. सो वॉट डिड आई लर्न? आई लर्न दैट ट्रांसपेरेंसी से मेरे अंदर एक विश्वास आया. वही ट्रांसपेरेंसी अगर मीडिया एग्जीक्यूट करेंगी तो हमारे देशवासियों के अंदर फिर से वो विश्वास आ जाएगा उस मीडिया के लिए जो हमारे देश का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री की पहचान है. सो या आई थिंक आई मेड सम सेंस. थैंक यू. सो वो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए मेरी सजेशन होगी कि येस वी कैन हैव ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स इन मीडिया हाउसेस. हॉस्पिटल्स के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती है तो मीडिया हाउसेस के अंदर भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हो सकती है, सो दैट देयर इज ट्रांसपेरेंसी. कोई भी जाएगा उसको पता है कि हम मॉनिटर हो रहे हैं, तो अंदर से रूह से एक होगी कि भैया कोई मुझे देख रहा है, मैं कुछ गड़बड़ नहीं करूं, एंड आई विल बी ऑनेस्ट टू द चेयर वेयर आई एम सिटिंग. बट ये तो तब तक होगा जब तक दैट पर्सन इज सिटिंग ऑन द चेयर. वंस ही गोज बैक होम देयर इज नो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग. ही इज नॉट गोइंग टू बी आंसरेबल टू एनीबडी, ही इज नॉट गोइंग टू बी मॉनिटर्ड. वो अपना फोन उठाएगा, ही विल टॉक टू समबडी, दे विल मीट समबडी, एंड अगेन दे विल बी mixture of information, because here we are talking about misinformation that is coming through media. तो क्या करना चाहिए? I think the only thought that I can express for this is conscious awakening of the soul of the media person and the journalist. Consciously awakening them. How do you do that? I think that is a life journey. We talk about it. I can again share my experience. जैसे मैंने आपको बोला 2 साल पहले there was a very sad demise of an actor, a superstar from our industry, Shri Sushant Singh Rajput ji, and everybody talked about how to get justice for him, and I was very active in that campaign. मैंने consciously वो campaign को support किया, मगर जब मैंने वो campaign को support किया, मेरी tonality बहुत hurtful थी to lot of people. I was hurtful, I was really, really mean, and today on this platform, I apologize to all those people whom I must have hurt because I was so angry, I was so hurtful with the death of this great superstar. तो ये मेरी conscious awakening थी, ये मेरा learning process था. वैसे ही I hope there is a conscious awakening among the human beings who are the media persons sitting out here, the journalists sitting out here, the esteemed people sitting out here, because आप लोगों की conscious awakening आप ही कर सकते हैं. हम अपना हाथ अपने दिल पर रखकर बोलते हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम अपना हाथ दिल पर रखकर बोलते हैं कि हम अपनी दिल की आवाज़ सुनेंगे, जो सही है वो करेंगे, जो गलत है वो नहीं करेंगे. तो वो जो दिल पे हाथ रखने का शपथ है वो मैं नहीं ले सकती, बट सिर्फ होप कर सकती हूँ कि आप सब लोग जो यहाँ पर बैठे हो वो खुद अपने ले लोगे. And that is my ethical advice to you. इसका solution क्या हो सकता है? इसका solution obviously ये हो सकता है कि जिस प्रकार से मैंने transparency देखी हाई कोर्ट के अंदर, वही transparency को we can see get converted into digital India. Digital India, social media. Yes, I understand social media has a lot of flaws also. We have trolls, we have people who are
स्प्रेडिंग नेगेटिविटी, मगर हमें सोशल मीडिया को यूज़ करना है फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस, हमें डिजिटल इंडिया को यूज़ करना है फॉर क्रिएटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज दैट इज़ आवर वेपन इन टुडेज टाइम एंड दैट इज़ द सोल्यूशन टू फिगर आउट द अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो कुछ लोग करते होंगे, या दे माइट बी विक्टिम्स ऑफ दैट थॉट प्रोसेस जिसकी वजह से शायद पूरा मीडिया आज की तारीख में कटघरे में खड़ा हो गया है. सो आई डोंट थिंक वी कैन पास अ ब्लैंकेट जजमेंट ऑन एंटायर मीडिया. आई डोंट थिंक वी कैन पास अ ब्लैंकेट जजमेंट ऑन ऑल द जर्नलिस्ट. सब बुरे नहीं है, सब सही नहीं है, मगर येस, अवेकनिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज राइट नाउ एट द प्रेजेंट स्टेज आई सी certain media group selling one narrative, another media group selling another narrative, and that is wrong. Kyunki media needs to be unbiased, media needs to be neutral, media should not get influenced by the ruling party or the opposition party. And इसलिए हमारे देश में अगर corruption भी end करना है, then digital India is very, very important part of it. And one more thing before signing off is that हेट स्पीच, यस, हमने सुना कि कैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है टू टेक इनटू कंसिडरेशन एनीथिंग दैट इज़ क्वालिफाइंग फॉर हेट स्पीच. मीडिया से मेरी दरखास्त है टू ऑल द जर्नलिस्ट, टू ऑल द टेलीविजन चैनल्स who have anchors who are you know maybe talking about an issue or talking about a topic, please don't promote it as hate speech, because hate speech is a crime against humanity. You cannot like a certain practice, you cannot like a certain ritual, but you cannot hate that human being who might be doing that practice or ritual. तो वो differentiation लाना बहुत ज़रूरी है, and that is important, and it is very important कि media इसको समझ ले. मेरी बहुत इंग्लिश है, मेरा थॉट्स इंग्लिश में फटाफट आता है. आई रियली होप आई मेड सम सेंस, बिकॉज फॉर मी मीडिया इज स्टिल अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. और इस पिलर को जीवित रखने के लिए, इस पिलर के ऊपर जो विश्वास है हर भारतीय नागरिक का, उस पिलर को जीवित रखने के लिए एथिकल कॉन्शियस अवेकनिंग ज़रूरी है. आप एक तरफ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, मगर जो इंडिविजुअल कॉन्शियस अवेकनिंग आएगी वो आप खुद ही कर पाएंगे, बिकॉज ये आपका ज़मीर है, ये आपका प्रोफेशन है, ये आपका देश है. थैंक यू.